अष्ट सहेली ग्रुप की प्री नवरात्रि इवेंट एक दिन के गरबा का निजी होटल में आयोजन करवाया गया था। तब इसी के साथ अष्ट सहेली बेस्ट डिजाइनर अवार्ड का भी आयोजन हुआ था। तब इस आयोजन के तहत अतिथि विशेष के तौर पर बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता की मौजूदगी दर्ज की गई थी। वडोदरा में अष्ट सहेली ग्रुप ने 6 साल पूर्ण कर लिए हैं और इस साल अष्ट सहेली ग्रुप अपने 7वें साल में प्रवेश कर रहा है। वैसे अष्ट सहेली ग्रुप की ओर से बीते 6 सालों से नवरात्रि पर्व से पहले गरबा का आयोजन करवाया जाता है। तब इस साल भी अष्ट सहेली ग्रुप की ओर से एक दिन के गरबा का आयोजन वडोदरा के एक निजी होटल में करवाया गया था। इस आयोजन के साथ अष्ट सहेली बेस्ट डिजाइनर अवार्ड का भी आयोजन हुआ था। तब इस दौरान 450 से ज्यादा बहनें मां जगदम्बा की आराधना करने के लिए पहुंची थी। वैसे इस आयोजन के तहत अतिथि विशेष के तौर पर बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और साथ ही नवरचना एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन तेजल अमीन मौजूद रहे थे। तब आपको बता दें कि इस दौरान उपस्थित बहनों की ओर से काफी उत्साह से मां जगदम्बा की आराधना करते हुए गरबा खेला गया था और फिर इसके अंत में बेस्ट डिजाइनर अवार्ड से विजेताओं को बीआरजी ग्रुप के चेयरपर्सन लताबेन गुप्ता और साथ ही नवरचना एजुकेशन सोसाइटी के चेयरपर्सन तेजल अमीन की ओर से सम्मानित किया गया था। अष्ट सहेली ग्रुप ऑफ वडोदराનું અમારું આ છઠ્ઠું વર્ષ છે। 7મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને આ ગરબાનું આયોજન અમે જ્યારથી અમારું ગ્રુપ શરૂ થયું ત્યારથી જ ચાલુ કરેલું છે। પણ આ વર્ષે ગરબામાં એક નવીન પ્રયોગ એવો લાવ્યા છીએ કે અષ્ટ સહેલી બેસ્ટ ડિઝાઇનર અવોર્ડ। અમે જ્યારે ગ્રુપ શરૂ કર્યું ત્યારે અમારે સેવા કરવી એવું અમારું મહત્ત્વ હતું, મહાત્મય હતું અને એની સાથે અમે સાડી લાઇબ્રેરી શરૂ કરી, 15 ગરીબ દીકરીઓનું કરિયાવર કર્યું। ગરીબ માતાઓ છે જેના કોઈ નથી એના અમે લોકો સહભાગી થયા અને એમની તમે જરૂરિયાતો પૂરી કરી અને હવે આજે અમે બેસ્ટ ડિઝાઇનર અવોર્ડ એ કર્યો છે કે જે દીકરીઓ ઘરમાં રહી અને પોતે ક્રિએશન કરે છે, જેના સ્ટુડિયોઝ નથી, તો એ દીકરીઓને અમે પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે આજે અને એ હેતુથી આ ગરબાનું અમે આયોજન કર્યું છે। અને વડોદરાને એક સંદેશો બી આપવો છે કે અત્યારની યુવા પેઢી આપણો ઓરિજિનલ વડોદરાનો ભાતીગળ ગરબો ભૂલતી જાય છે। તાળી, ચપટી ને ઠેસ જે આપણે ઓરિજિનલ ગરબાની ઓળખ છે કે જે ખરેખર માતાજીની આરાધના છે, એ યુવાનોને એક સંદેશો આપવા માટેનું આ ગરબાનું આયોજન કરેલું છે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।